Hello guys, good evening to everybody. So welcome back to my YouTube channel. So today I'm front of you live, and today I'm going to explain you revision of a complete chapter in very short. Yes, we were talking about the chapter number 20. We were talking about the chapter number 20, that was a locomotion and movement. Yes, or movement and locomotion, whatever you say. As per the syllabus of State Board and NEET, the name goes on changing. So we are going to discuss this chapter, और पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको ऑलमोस्ट 15 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा रिवीजन. यस, सी, आर यू एबल टू लिसन मी प्रॉपर्ली गाइस? आर यू एबल टू लिसन मी प्रॉपर्ली? बिकॉज आई थिंक सो, आई होप सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन द माइक. आर यू एबल टू लिसन प्रॉपर्ली? कम ऑन, एक बार कमेंट कर दीजिए. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम. जय गणेशाय नमः. ठीक है. See, we were talking about the chapter locomotion and movement, chapter number 20 from the 11th standard CBSE, and this chapter is based on two main things. One is a muscle and second one is a skeleton, muscle in skeleton. At the beginning we discussed that locomotion and movement, there are two different concepts. Locomotion is nothing but displacement of a complete body from one position to another position. जब हम हमारी पूरी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर देते हैं तो उस कंसेप्ट को हम कहते हैं लोकोमोशन. और ये एक प्रकार की मूवमेंट भी हुई, बिकॉज हम हमारी बॉडी को मूव तो कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ये मूवमेंट भी है और ये लोकोमोशन भी. ये दोनों के दोनों चीजें हैं. ठीक है. मैंने आपको तीन प्रकार की मूवमेंट एक्सप्लेन की हुई थी. वन वाज द अमीबॉइड मूवमेंट, second one is a ciliary movement, third one was a muscular movement. Amoeboid movement was shown by macrophages and WBC because it was movement by the pseudopodia, a type of appendages for movement which is not seen clearly, that's why it is called pseudopodia. उसके बाद हमने देखा था ciliary movement. Ciliary movement is a movement performed by the cilia, generally paramecium cilia के थ्रू मूवमेंट करते हैं. और काफी सारे हमारी बॉडी में भी इपिथेलियल लाइनिंग होती है जहां पे सीलिया अवेलेबल होते हैं, तो वो पार्ट्स की भी मूवमेंट्स सीलियरी मूवमेंट में कैटेगरी में काउंट आती है. और थर्ड वन होता है मस्कुलर मूवमेंट. मस्कुलर मूवमेंट परफॉर्म बाय सम मसल्स, लाइक थ्री काइंड ऑफ मसल वी हैव इन आवर बॉडी, लाइक वन इज अ स्केलेटल मसल, सेकंड वन विसरल मसल, थर्ड वन कार्डियक मसल. हमने देखा हुआ था. हमने बेसिकली स्टार्ट किया इस चैप्टर में व्हाट इज मसल एंड टाइप्स ऑफ मसल. Let's begin. Muscles are nothing but the organ of our body which are making around 40% weight of our complete body. Muscle हमारी बॉडी में around 40 to 50% weight carry करते हैं. और muscle is a organ. Tissue is called, muscle is made by the tissue called muscular tissue, and tissues are made by the cell called muscle cell. Muscle cells are also known as a fascicle, and a group of a muscle cell which are united with each other by the collagenous tissue known as a fascia. Single muscle cell is also known as a muscle fiber, and outer membrane of the muscle cell is known as a sarcolemma. Cytoplasm is called sarcoplasm. Endoplasmic reticulum is called sarcoplasmic reticulum. ये हमने कुछ बेसिक चीजें देखी थी. मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ बिकॉज ये सिर्फ रिवीजन है. अगर आपको डिटेल में देखना है तो पूरे वीडियो मेरे देख सकते हो, मैंने इनको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. थ्री टाइप ऑफ मसल्स आर देयर इन आवर बॉडी. वन इज द स्केलेटल मसल. Skeletal muscles are controlled by our willpower, controlled by our central nervous system. They are also known as a striated muscle because they have a stripe-like appearance. Second muscles are visceral muscle, which are present in some involuntary organ. Yes, some visceral soft organ like a stomach, you can say urinary bladder, uterus, and some reproductive part, etc., etc. They are also known as a visceral muscle or smooth muscle because they are soft. Visceral muscle because they are present on visceral organ. They are also known as a cardiac muscle because they are sorry. Third type of muscles I was explaining. The third type of muscles is called cardiac muscle, which are only and only present in our heart. Cardiac muscles are also striated muscle. Cardiac muscles are involuntary muscle, and visceral muscles are also involuntary muscle. So in visceral and cardiac muscles are involuntary, not controlled by central nervous system but controlled by autonomic nervous system, ANS, not by CNS. ये तीन प्रकार के मसल हो गए.
फिर हमने मसल में कुछ बैंड देखे थे, आई बैंड, ए बैंड, एच लाइन, एम लाइन, सार्कोमियर विच इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। फिर हमने देखा था कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन? The protein which shows ability of a contraction, they are called contractile protein. The protein which shows ability of contraction, they are called contractile protein. For example, actin and myosin. Yes, actin is a thin protein, whereas myosin is a thick protein. Actin is a thin protein which is further made by two type of protein. One is a G protein, stand for globular protein. Second one, F protein, stand for F actin protein. Then F-actin also have a subtype like troponin and tropomyosin. Troponin and tropomyosin. And myosin is a thick protein. Myosin is a thick protein which have a two main region. One is a head region and then cross arm region with also tail is attached to cross arm. ऐसा ही एमसीक्यू आपको सब आएंगे। मायोसिन का स्ट्रक्चर में कितने पार्ट्स होते हैं? हेड रीजन, क्रॉस आर्म एंड देन टेल। एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपको कल में जब आपको क्वेश्चन समझाऊंगा कि मायोसिन में कौन सा आर्म होता है, तो उसमें शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म, इन्वर्टेड आर्म, क्रॉस आर्म, ऐसे चार आर्म होते हैं। क्रॉस आर्म उसका आंसर होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। ट्रोपोनिन जो होता है वो ट्रोपोमायोसिन चेन के ऊपर लॉकिंग का काम करता है और ट्रोपोमायोसिन एफ एक्टिन के ऊपर ओवरलैप होती है चेन के जैसे। फिर उसके बाद हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। Muscle contraction, mechanism of muscle contraction can be studied by the sliding filament theory, which says that the muscular movement or mechanism of muscle movement can take place when thin protein slide on thick protein. Means thin protein is the actin protein which slide on thick protein called myosin protein. Generally, for the muscle contraction, first message comes from the brain, from central nervous system via motor neuron. When this motor neuron connect to the sarcolemma, when this motor neuron connect to the muscle fiber, it is called as a motor end plate, or also known as a neuromuscular junction. Motor end plate or neuromuscular junction. Yes, sorry, it's called as a motor unit. And when this central nervous system's message via motor neuron connect to the sarcolemma, it is called motor end plate, also known as a neuromuscular junction. When this message connect to the sarcoplasm and then it goes inside the cytoplasm, in sarcoplasm, calcium ion is released. This calcium ion bind to the troponin and remove masking. It becomes unmask or remove the locking. Once troponin जैसे निकल जाता है तो ट्रोपोमायोसिन भी निकल जाता है। ट्रोपोमायोसिन निकलने के बाद एक्टिन प्रोटीन पूरे फ्री हो जाते हैं। अब ये एक्टिन प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन के ऊपर स्लाइड कर दे। कहां पे? एक्टिन बाइंडिंग साइट के ऊपर। मायोसिन के ऊपर दो साइट होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट के ऊपर एक्टिन मॉलिक्यूल बाइंड होता है, फिर एटीपी मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट के ऊपर, और उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन को बंद करने के लिए क्या हो गया? एटीपी में से एक फॉस्फेट निकल जाता है और उसका कन्वर्जन एडीपी में हो जाता है, और एडीपी मॉलिक्यूल कैल्शियम को फिर से रिमूव कर देता है ट्रोपोनिन के साइट में से, और कैल्शियम जैसे निकल जाता है तो ट्रोपोनिन फिर से ट्रोपोमायोसिन के ऊपर कवर कर लेता है, और ट्रोपोमायोसिन फिर से एक्टिन प्रोटीन को जकड़ लेता है, मतलब पकड़ लेता है, लॉक कर देता है एक प्रकार से, और ऐसे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन रिवर्ट हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था skeletal system. ठीक है, skeletal system, human skeleton is the framework of our body which is made by bone and cartilage, 206 number of bone and some number of a cartilage. Generally this skeleton provides us locomotion, movement, giving a body shape, support, protection to the internal organ, etc etc। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है skeleton से related। मैंने आपको ये बताया था कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जनरली आवर बॉडी इज हैविंग 214 बोन्स, बट आफ्टर सम डेज, आफ्टर फ्यू मंथ, it remains only 206 bone because of massage therapy. The process is called ossification. मैंने आपको ये भी बताया था study of bone is called osteology and study of cartilage is called chondrology. Study of joint is called arthrology.
हमने स्केलेटन देखा था, ह्यूमन स्केलेटन वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक्साइल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन. Axial skeleton was having 80 bone, appendicular skeleton was having 126 bones. So total it's a 206 bone. Axial skeleton is made by 22 bone in the head region and skull, and 33 bone in the vertebral column, 25 bone in the rib cage. So total they becomes 80. And in appendicular skeleton, 30 bone in one arm, such as one humerus, ulna radius, 8 carpal, 11, 5 metacarpal, 16, and 14 phalanges, 30. 30 plus 30 is 60. And in lower arm, you can say foot region, there is a one femur, one is tibia, one is a fibula, 3, plus one patella, 4. And then, yes, there are 7 tarsal, 11, 5 metatarsal, 16, and 14 phalanges, 30. 30 plus 30, 60, and 6, 30, 30 in legs. So they become 60, this becomes 60. So total they becomes 120. Then 2 clavicle and 2 scapula, 4, and 2 hip bone, 6. So 126 and plus 80. So they are 206. उसके बाद हमने देखा था joints. There are 3 kind of joints in our body, such as the synarthrosis, which provides 0% movement. 3 examples: sutures of skull, syndesmosis, and gomphosis. Then amphiarthrosis, which is also called cartilaginous joint, which provides how much movement? They provides slightly movement. Therefore, they are also called slightly movable joint. Yes, intervertebral joint, synchondrosis joint, ऐसे एग्जाम्पल थे. और उसके बाद हमने देखा था डायर्थोसिस, also known as the synovial joint, which has a ball and socket joint, gliding joint, condyloid joint, saddle joint, pivot joint, hang joint, etc. etc. ऐसे 6 joints देखे थे उसके अंदर एग्जाम्पल हमने. और synovial joints provides a perfect movement, therefore it is also called perfect joint or ideal joint. उसके बाद हमने देखा था muscular and skeletal disorder like a myasthenia gravis, where there was a blockage of acetylcholine due to abnormal amount of antibody, and so message doesn't come from the brain. Then tetany, maximum message come from brain, opposite to the you can say myasthenia gravis. And then we discuss about osteoporosis, deficiency of calcium. And then we discuss about muscular dystrophy, degeneration of particular muscle. Then arthritis, gout arthritis due to deposition or accumulation of uric acid. Osteoarthritis, degeneration of a particular cartilage pad. And then rheumatoid arthritis due to the secretion of extra amount of a synovial fluid by the pannus granule. So यहाँ तक हमारा चैप्टर था और ये हमारा रिवीजन. कल अब हम देखेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस. So guys, do tell me, are you satisfied with this topic? Introduction, revision समझ में आ गया? मैंने काफी शॉर्ट में समझाया आपको, क्योंकि पूरा चैप्टर हमने डिटेल में देख ही लिया. एक बार रिप्लाई दे दीजिए if you understood. So I'll just stop this, and tomorrow we will meet for the MCQ practice. Okay. चलो.